Hello everyone, myself Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today, in this video, we are going to discuss about theory of affinity chromatography. In the previous video, we already discussed about its principle and classification. So now we are discuss about theory. By affinity chromatography, highly selectivity separation of biomolecule can be achieved through their separation interaction. एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम जो हाईली सिलेक्टिवली सेपरेशन है बायोमोलिक्यूल्स की वो कर सकते हैं थ्रू देयर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन. The separation explored the locant key binding that prevalent in biological system. जो सेपरेशन है वो किस पे बेस है, हमारे लोकेंट की बाइंडिंग, क्योंकि जो हमारे एनालाइट हैं जिनको सेपरेट होना है वो क्या करते हैं, कोवलेंटली अटैच होते हैं. देन ये क्या करते हैं, लोकेंट की बाइंडिंग की फॉर्म में सेपरेशन होती है. The stationary phase for affinity chromatography is solid such as agarose to which affinity ligand is immobilized. जो हमारे स्टेशनरी फेस यूज़ होते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में वो क्या है, सॉलिड सच एज agarose. Agarose is very popular because of its porous meshwork and it permits the high degree of ligand substitution and is more accessible to the large molecules. The ligand fixed to the stationary phase reversibly bind the desired biomolecule present in the mobile phase. This material can be eluted from the column by changing the composition of the mobile phase. जो लिगेंड है वो स्टेशनरी फेज के साथ रिवर्सिबली क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, जिनको एल्यूट करने के लिए हमने मोबाइल फेज की कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है, जैसे कि उनके पीएच चेंजेस हो गया, टेम्परेचर, पोलैरिटी, ionic strength. So by the change of the composition or conditions of mobile phase we can elute the reversibly bind molecules. List of some of the commonly used interactions in affinity chromatography. Enzymes हैं कुछ, then उनके substrate analog और inhibitors हैं जिनकी एक specific interaction होती है, specific binding होती है. Antibody, enzyme and substrate is antigen that are virus or cells. Nucleic acid, complementary nucleic acid. Nucleic acid में histone और other nucleic acid binding protein. Hormones, hormone receptor. Glutathione, glutathione S transferase GST fusion protein. Metal chelate, that is His-Tag fusion protein. So these are the some of the commonly used interaction used in affinity chromatography. Thank you. Have a nice day.